Technical Education Department, Government of Gujarat. Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Government of India. Shri Banshanidhi Pani, IAS Commissioner of Technical Education, Government of Gujarat. And Shri P.B. Pandya, IAS Director of Higher Education, Government of Gujarat. सभी मंचस्थ विराजमान गणमान्य अतिथियों का हम आज के इस विशिष्ट अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं. Now, in order to start this event and seek the blessings from Almighty, we request the esteemed dignitaries present on the dais to kindly step forward for lamp lighting. Dhanyavad. Today we have with us the esteemed dignitaries for their august presence and for also their total support. We would like to felicitate them with a book and a memento. Foremost, I would request Shri Mukesh Kumar, IAS Principal Secretary, Education Department, to kindly welcome Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat. Thank you. I would now request Shri Banshanidhi Pani, IAS, Commissioner of Technical Education, to kindly welcome Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Thank you. I would now request Shri P.B. Pandya, IAS Director of Higher Education, Government of Gujarat, to kindly welcome Shri Rishikesh Patel, Honorable Minister, Health and Family Welfare and Medical Education, Higher and Technical Education, Law, Justice, Legislative and Parliamentary Affairs, Government of Gujarat. I would now request Shri Banshanidhi Pani to welcome Shri Rajkumar, IAS Chief Secretary, Government of Gujarat. Thank you. I would now request Shri Banshanidhi Pani to welcome Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT, Government of India. Thank you. I would now request Shri P.B. Pandya to welcome Shri Mukesh Kumar. Thank you. I would now request Shri Tushar Rawal, Additional CEO, Gujarat Knowledge Society, to welcome Shri Banshanidhi Pani, IAS, Commissioner of Technical Education, Government of Gujarat. Thank you. I would now request Dr. Dharmesh Mandalia, Joint CEO, Gujarat Knowledge Society, to kindly welcome Shri P.B. Pandya. Thank you very much. I would now call upon Shri Mukesh Kumar, Principal Secretary, Higher and Technical Education Department, Government of Gujarat, to kindly deliver the welcome address and set the tone for the event. गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब, भारत सरकार के मिनिस्टर फॉर
State for Skill Development, Entrepreneurship, Electronics and Information Technology, श्री राजीव चंद्रशेखर साहब, गुजरात सरकार के मिनिस्टर फॉर हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, हायर एजुकेशन श्री ऋषिकेश पटेल साहब, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री राजकुमार सर, भारत सरकार से हमारे बीच में उपस्थित सेक्रेटरी DPIIT श्री राजेश कुमार सिंह सर, माय कॉलीग बच्चा निधि पानी एंड डायरेक्टर हायर एजुकेशन, एंड esteemed speakers, distinguished guests, I extend a very warm and cordial welcome to all the distinguished guests and delegates. This Startup Conclave 2023 event was much anticipated event. We are all looking forward to this event for last 6 months or so. We're actively coordinating with the Government of India in shaping up this event as never before, where we thought all the stakeholders should be one platform and a startup journey. This event will give a catalytic edge to the entire event. India has emerged as the third largest ecosystem of a startup on global stage, and it is impressive count of over 99,000 DPIIT recognized startup. India has further secured a second position globally in terms of innovation quality, especially in scientific publication and quality of its universities. The Ministry of Electronics and Information Technology, METI, has been front runner in championing the innovation and preservation of IPR throughout the nation. The METI further participate in number of initiatives all across, not only to expand but also fortifying the startup ecosystem. And in the state, we are actively guided by the METI program and the policies. The Startup Conclave we have designed essentially serves as the essential bridge that connects India to the global stage. Last evening, we had extremely good roundtable conference with a couple of global accelerators and trying to take that perspective how the startups from India will have access to the global market as well as global funding. As a precursor to the event, we organize a New India Hackathon 2023 Grand Challenge, where the government issues and the problems were thrown open to the students from the college, and they came across fantastic solutions and they win with the happy rewards. In the state government, through iHub, through our program of a Startup Rise, where the investor pitching, etc. takes place, we got 146 crores of investment placed to startup by various funding agencies. And today, we are not here to celebrate the incredible journey of our startups, but also how, from humble beginning, they have got to the global recognition. They also inspire and motivate other entrepreneurship spirits amongst us. India now stands proud to the home of 108 unicorns, which collectively commands a valuation of over $340 billion. These unicorns over years have collectively raised over $94 billion of the funding, and their growth trajectory and monumental impact they have created nothing short of inspirational. So it is incumbent upon us to acknowledge the pivotal role both domestic funding is going to play and as well as international funding in times to come in the growth and development of Indian startups. So understanding the perspective and aspirations of investor is very crucial in this journey. Today we have got one of the sessions really dedicated to investors' perspective. And this conclave will delve deep into the nuances of investors' landscape. Further, we want to explore the global opportunities that startup has, and we have got special sessions. How can we have more international collaborations? And we all talked about how artificial intelligence will play a role for the growth of startups in India. Startup Conclave stands as a platform that celebrates innovation, nurtures startups, and encourages private investments. We have the potential to cultivate an ecosystem that is not merely flourish, but also makes a contribution to the Indian economic prosperity and technical advancement. I express my heartfelt gratitude to each one of you for your esteemed presence, and I anticipate the day will be filled with profound insight, enlightening discussion, and fruitful exchanges. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your warm welcome note and introductory remarks. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया मिशन की दिशा में गुजरात काम करने में सबसे अग्रसर है और आज का यह स्टार्टअप कॉन्क्लेव गुजरात की स्टार्टअप गाथा को दर्शाने का एक विशिष्ट प्रयास है। आइए उसी उपलक्ष्य में देखते हैं एक ऑडियो विजुअल फिल्म।
ये केवल कॉन्क्लेव नहीं, ये है उज्जवल भविष्य का सुनहरा पथ। इस तेजस्वी पथ पर नए अवसरों को संजोकर अटल खड़ा है गुजरात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना है नए भारत का आधार स्तंभ बनेंगे स्टार्टअप्स। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत के विकास में स्टार्टअप्स की भूमिका रहेगी अनूठी। और अब गुजरात को भारत में स्टार्टअप्स की भूमि का सम्मान दिलाने हेतु कटिबद्ध है गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। इस यात्रा में युवा उद्यमियों को एक नई राह दे रही अभूतपूर्व पहल है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। इनोवेशन की इस पहल से मिली गति और परिणाम मिला अपूर्व। गुजरात एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो इनोवेशन को देगा ऊंची उड़ान। पर इतना काफी नहीं, इस सफर को और रोमांचक बना रहा है आई हब का नया कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां प्रतिभाशाली युवाओं को मिलेगा मंच और खिलेगा उज्जवल भविष्य। जहां है को वर्किंग स्पेसेस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और 360 डिग्री मेंटरशिप। यानी कि ये सिर्फ हब नहीं, पूरी कम्युनिटी है जहां कल्पनाओं को मिलते हैं पथ। और अब जानते हैं गुजरात की इनोवेशन यात्रा के अनोखे अध्याय के बारे में। द न्यू इंडिया वाइब्रेंट हैकाथॉन 2023, जहां मंच मिला प्रमुख संस्थानों द्वारा 231 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और इनोवेशंस को, जिसका प्रतिसाद था अभूतपूर्व। 2062 टीम्स के 10,449 विद्यार्थियों ने तलाशे अनूठे सोल्यूशंस। रीजनल राउंड में 1,463 टीम्स ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया, जिसमें से 7,826 विद्यार्थियों ने इनोवेशंस की सीमाओं को पार कर दिखाया। ग्रैंड फिनाले राउंड में 1,024 विद्यार्थियों की 181 टीम्स ने फाइनल शो राउंड में अपना स्थान प्राप्त किया। 181 में से 36 टीम्स बनी विजेता, जिनको 42 लाख की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई। इन उल्लेखनीय उपलब्धियों की अहम बात यह है कि इसमें 3 टीम थी गर्ल्स की और 3 टीम्स थी स्कूल्स की। स्टार्टअप्स की क्षमता को मंच और आर्थिक बल दे रही और एक पहल है राइज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 के अंतर्गत। इस पहल में स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर प्रारंभिक चरण में रहे स्टार्टअप्स में निवेश हेतु आई हब को 343 आवेदन प्राप्त हुए। पोर्टल में प्राप्त सभी आवेदनों पर 58 इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ परामर्श किया गया और प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद 146 करोड़ से अधिक की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई। स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शानदार शुरुआत से पहले इनोवेशन के इस अभिगम को पहुंचाया देश के विभिन्न क्षेत्रों में, जिसके साक्षी बने दिल्ली एनसीआर, राजकोट, लखनऊ, वडोदरा, सूरत और भुवनेश्वर। और ये पहल केवल इवेंट न रहते हुए अभियान बन गई। स्टार्टअप कॉन्क्लेव में खिलने वाले अप्रतिम अवसरों की शुरुआत बन गई, जिसमें उपस्थित लोगों की संख्या थी हजारों में। स्टार्टअप से लेकर स्टूडेंट्स, निवेशकों से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्थानिक सहयोगियों से लेकर अनगिनत लोग सक्रिय रहे। नई प्रतिभाओं से लेकर अग्रिम उद्यमियों तक, इंक्यूबेटर से लेकर दूरंदेशी व महत्वाकांक्षी युवाओं तक, हर किसी के लिए उज्जवल भविष्य का विशाल मंच लेकर तैयार है गुजरात। वेलकम टू द स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023। धन्यवाद। I would now request Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary DPIIT, Government of India, to kindly share his insights on this occasion. Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Minister of State for Electronics and IT and Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, Honorable Minister of Higher and Technical Education, Government of Gujarat, my esteemed colleague, Chief Secretary of Government of Gujarat, my other colleagues,
Principal Secretary of the Education Department, and the Commissioner of Technical Education, other dignitaries on the dais, stakeholders from the wider startup ecosystem. Let me start by saying I'm delighted to be here at the launch of the Startup Conclave organized by the Government of Gujarat. When the Honorable Prime Minister of India launched the Startup India initiative on 15th August 2015, it was followed up by an action plan for Startup India on 16th January 2016. That action plan had three major pillars: simplification and hand-holding of procedures for our startups, funding support and incentives, and industry-academia partnership and incubation. The idea was, the overarching mission was to create a nation of job creators and not just of job seekers. This scheme has had a huge impact across the country, including in Gujarat. The number of recognized startups has gone up from 420 then to 1.14 lakh plus today. The entrepreneurship footprint across the country has expanded from 120 districts to over 700 districts. The number of states with dedicated startup policies has increased 8 times. And as was mentioned earlier, the number of unicorns has increased by 13 times from a mere 8 then to 111 in 2023. We now have the world's third largest startup ecosystem, and it is also a result of the government's continuing investment both in physical infrastructure and in digital infrastructure. Particularly the role of the digital public infrastructure that India has created in the form of a biometric ID system, mobile coverage, 5G coverage across 700 districts of the country. All these have played a major role in the proliferation of private investment as well as in the dynamism shown by the startup ecosystem in the country. It is also the reason why India is #1 in the world in terms of fintech adoption. We have almost 15% of the world's agri-tech startups in India, and 1 in 5 of our startups are now are in the area of fintech. Also, in terms of growth, in terms of the number of startups being registered on a daily basis, India now is at the forefront. It has the highest number of such growth in the world. We also have startup bridges with over 20 countries, many of which are eager to learn from our startup ecosystem. It's also an inclusive growth that the startup ecosystem has shown, with as many as 50% of our startups in Tier 2 and Tier 3 cities, and over 47% of them having at least one woman director. The Government of India has tried to provide a combination of seed capital as well as VC investments through the Fund of Funds scheme, which we operate through SIDBI in order to generate momentum and growth for the sector. Also, as part of the Startup 20 engagement group, as part of the G20 India presidency, which concluded very recently, all G20 countries have pledged together to invest over 1 trillion in the startup ecosystem in the next decade. Coming to Gujarat in particular, Gujarat is home to more than 9,000 DPIIT recognized startups, with 43% of the startups having at least one woman director, and as many as 57% of these startups in Tier 2 and Tier 3 cities. They have created so far 1 lakh plus jobs in the state, and many of them are in the ideation, validation, and prototype stage, which shows that the ecosystem here is maturing. Best of all, Gujarat, in our overall state ranking system for the startups in the country, Gujarat has come first in the last 3 editions of our startup ranking framework, which is a testament to the proactive support being provided to startups by the Government of Gujarat. Let me end by saying that I hope you will all keep up the good work, use engagements like this to further your dreams, and through the realization of your dreams, the country will realize its dreams of becoming a developed nation in the next 25 years. Thank you very much for calling me today. All the best. Thank you so much, sir, for your significant address and also for extending the good wishes.
I would with pleasure now request Sri Rajkumar, Chief Secretary, Government of Gujarat, to kindly share his thoughts with us. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Union Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship, Electronics and IT, Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Medical Education, Higher and Technical Education, Law, Justice, Legislative and Parliamentary Affairs, Shri Rishikesh Patel ji, Secretary DPIIT Government of India, Shri Rajesh Kumar Singh ji, my colleague, Principal Secretary, Technical and Higher Education, Shri Mukesh Kumar, Shri Vanchanidhi Pani, Shri P.V. Pandya, dignitaries, investors and VC funds, incubators, members of the startup community, exhibitors and dear students, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of privilege to address this Startup Conclave 2023. On behalf of Government of Gujarat, I thank you all for being here with us today. It's indeed heartening to see the enthusiasm and the warmth of this esteemed gathering, Startup Conclave 2023, a pioneering odyssey into the future. As we all know, the idea behind startups is to promote entrepreneurship and provide employment opportunities and in turn boost the GDP of the country. The Indian startup industry has tremendous potential for growth and innovation because we have a large pool of skilled workers, manpower, a supportive government and a growing market. With the right support and funding, time and again it has proven that Indian startups can scale up and become global players, contributing to country's economic growth and development. As was mentioned earlier, India has emerged as the third largest ecosystem for startups globally, with over 115,000 DPIIT recognized startups. During the last 7 years, we have seen this startup ecosystem has increased in terms of funding by 15 times, 9 times increase in number of investors, and 7 times increase in number of incubators. It's a matter of great satisfaction that our startup ecosystem is as diverse as the country itself. India has recognized startups solving problems in 56 diverse sectors, 13% from IT services, 9% from healthcare and life sciences, 7% from education, 5% from agriculture, 5% from food and beverages, and so on. This Startup Conclave 2023 aims to showcase the power of youth in building an innovative system for Vikasit Bharat at 2047. And it is built around integrated format of hackathon, roundtable with unicorn and VCs, startup exhibition, and startup ecosystem plenary sessions which will be held today. As part of this conclave, the exhibition featuring over 300 innovative startups, exhibitors from various sectors will explore the future as we showcase the startup from 10 emerging sectors, offering a glimpse into the next set of big ideas. Also, as has been mentioned, Gujarat has been a land to more than 9,000 startups. As per Startup India, Gujarat has been awarded Best Performer in State's Startup Ranking since last 3 years by Government of India. Since 2017, the Student Startup and Innovation Policy in Gujarat stands as a pioneering initiative in the country, fostering a unique ecosystem for young minds. As the first of its kind, this policy has played a pivotal role in encouraging students to actively engage in research and innovation, providing platform for their entrepreneurial aspirations. This international event will connect our state with the country and the world, proving to be a landmark for bringing together startup investors, angel networks for exchange of ideas and opportunities. Let me also do some reality check. Though startups like Flipkart, Paytm represent success stories of our startup ecosystem, but we should also acknowledge the fact that against each success,
there have been several failures. According to business owners, reasons for failure include either lack of money, being in the wrong market at the wrong time, lack of research, bad partnerships, ineffective marketing, and not being an expert in the sector that a startup aims to come up with the business. In this background, I should say that Government of India and our state government have taken steps to facilitate startup entrepreneurs by easing regulations and minimizing costs and risk to the extent possible. For instance, companies which are registered with DPIIT, they are entitled to receive numerous benefits. DPIIT handholds these startups by simplifying their compliances, legal and operational processes. These startups are also exempted from capital gains and income tax if they fulfill the required criteria. Government of Gujarat has also set up incubators like iHub and IT8 and also provides grants and workplaces to reduce the cost up to the stage of proof of concept and sometime beyond it. In addition, our effort has been to connect with VC funds, and besides this also we have set up Gujarat Venture Funds Limited to provide financing to budding startups. Before I conclude, I would like to congratulate winners of New India Vibrant Hackathon 2023 and look forward to the declaration of the winners of Investors Pitch. Also, let me welcome you all to visit Gujarat for 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2024, which has been scheduled from 10th, 11th and 12th January 2024 at Mahatma Mandir, Gandhinagar. This summit will showcase Gujarat's distinctive accomplishments, strengths across sectors, and its preparedness to lead the vision of Viksit Bharat at 2047. Alongside the summit, Vibrant Gujarat Global Trade Show will also take place, and it will focus on business matchmaking, networking, B2B interactions, and events such as Buyer-Seller Meet, MSME Conclave would be of immense relevance. We are open to explore innovative ideas of investments, work collaboratively to create new opportunities to improve the socio-economic well-being of our citizens, as well as seek your inputs, feedback, and concerns regarding investments in Gujarat. We look forward to the opportunity of hosting you in Gujarat at the 10th Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Thank you. Jai Jai Gandhi Gujarat. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your insightful address and warm wishes. आज हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, गुजरात सरकार। आइए बहुत उत्साह के साथ उन्हें उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आज के कॉन्क्लेव में उपस्थित गुजरात के हमारे सबके मार्गदर्शक मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब, केंद्र से टेक्नोलॉजिस्ट और कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग को संभालने वाले राजीव चंद्रशेखर जी, राज्य के चीफ सेक्रेटरी राजकुमार जी, डीपीआईआईटी से राजेश कुमार सिंह जी, हायर एजुकेशन से मुकेश कुमार जी, बंछानी जी, पानी जी, पंड्या जी, और नए भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाले आप सब जो आज गुजरात में इकट्ठे हुए हैं और हमारे वाइब्रेंट गुजरात का जो कार्यक्रम गुजरात की बेहतरी के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री आए और इंडस्ट्री के साथ साथ नए इन्वेस्टमेंट भी आए, इसके लिए 2003 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहाँ पर जो मुहिम चालू की थी, आज पूरे भारत में वो रंग ला रही है। पूरे भारत के अंदर छोटे से स्केल पे चालू हुआ वाइब्रेंट गुजरात का प्रोसेस आज पूरे भारत के अंदर सभी राज्यों ने उसको एडॉप्ट भी कर लिया है। लेकिन इस बार हमने सोचा 2016 से चालू हुआ ये स्टार्टअप वाला जो इनोवेटिव आइडिया, दुनिया भर में इसकी बात चर्चा और
अमलीकरण भी चालू हो गया था। लेकिन 20वीं सदी तक यहाँ गुजरात और भारत में कहीं पर भी उसकी सोच नहीं रखी गई, नई नींव रखी गई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का विजन और जो उसका ड्रीम था कि दुनिया के साथ चलना है, दुनिया की टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी केवल दुनिया से आयात ना हो, यहाँ से टेक्नोलॉजी निर्यात भी हो, उस हिसाब से उन्होंने ये पूरा स्टार्टअप वाला जो कार्यक्रम था, जो आइडिया था, यहाँ भारत में रखा। और अब ये पूरे दुनिया के अंदर स्टार्टअप, क्योंकि टैलेंट हमारे यहाँ था, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, और यहाँ से बाहर जाने वालों की, अपने टैलेंट बाहर ले जाने वालों की कोई कमी नहीं थी। आज दुनिया भर से, और जब 2047 की 47 की बात होती है, तो आप विश्वास रखिएगा, आदरणीय मोदी साहब ने जो विजन दिया है, जो दृष्टि दी है, जो रास्ता दिया है, दुनिया भर से गया हुआ टैलेंट और नया पैदा हुआ टैलेंट भी इंडिया को, नए भारत की सोच के लिए इंडिया में ही काम करेगा और दुनिया भर से लोग यहाँ आएंगे। वैसे तो ये पूरा माइंड टू मार्केट की गेम केवल कोई आइडिया को, रो आइडिया को, कच्चे आइडिया को पक्के आइडिया और मार्केटिंग तक ले जाने के लिए पूरा प्रोसेस पहले कहीं पर भी नहीं था। अगर आप सोच लो, अमेरिका में ये ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एलन मस्क भी नहीं होता, गूगल और ये फेसबुक भी नहीं होता। लेकिन आज अब हमारे भारत के अंदर ये पूरा एटमॉस्फेयर निर्मित हो गया है, और ये निर्माण के कारण आज दुनिया भर के और अपने भी जो टैलेंट है वो सब जुड़े जा रहे हैं। लेकिन उसमें बड़ा सा फैक्टर, वैसे तो पहले बहुत सारी, अब हमारे भारत के अंदर 20वीं सदी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियां कहीं शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, कई बार तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है। अब समय आ गया है कि हमारे आइडिया पे इन्वेस्टमेंट करने वालों की भी तादाद और कंपनियां बननी चालू हो गई है, और अगले समय के अंदर हमारे टैलेंट पे, हमारे आइडियाज पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे सूरत में डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है, और सूरत में जो बिजनेस होता है उसमें डायमंड का पॉकेट का फराजी होता है, लेने वाला लेता है, लेके उसमें से सॉर्टिंग करता है, इसका ये मोल रहेगा, इसका ये मोल रहेगा, और अच्छे से अच्छे माल के ये मोल रहेगा। ये स्टार्टअप भी ऐसा ही एक पैकेज है, उसमें हर स्टार्टअप की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग मार्केट, अलग अलग मास तक पहुंचने की उसकी कैपेसिटी होती है, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंपनियां उसमें इन्वेस्ट करेगी और सोच पाएगी कि भाई ये मार्केट का, ये आइडिया का इतना कद है, इतना लगाएंगे, इसमें इतना लगाएंगे, तो ये प्रॉफिट के लिए ही नहीं, लेकिन प्रॉफिट के साथ में अपनी कंपनी का भी ग्रोथ हो, और उसमें कंपनी में भी लगाने वाले, पैसे लगाने वाले लोग, उसका भी ग्रोथ हो। इस तरह से बड़ा विजन करके अब यहाँ भारत में भी म्यूचुअल फंड भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अलग अलग जो कंपनीज जो निवेश करती है, इन निवेशकों का भी अलग ग्रुप बनके हमारे आइडियाज पे, हमारे टैलेंट पे इन्वेस्टमेंट करने की अब बारी और शुरुआत भारत में हो गई है। गुजरात में तो वैसे जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जैसे ही वो स्टार्टअप वाला आइडिया दिया, तब से 3 बार तो हम पूरे भारत के अंदर ये इकोसिस्टम में पहले नंबर पे आए हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री ने कल आई हब का, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन हब का इनोग्रेशन किया, और उसमें 500 जितने स्टार्टअप बैठ सके, काम कर सके, इन्वेस्टमेंट वाले भी काम कर सके,
पूरा एक सिस्टम बना के ये इनोवेटर्स को दिया है, इन्वेंशन करने वालों को दिया है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्तुत्य पगला है और उसमें राज्य सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये निवेश केवल बढ़ोतरी के लिए नहीं, अपने टैलेंट के निवेश किया है, टैलेंट पे निवेश किया है। और कोई भी राज्य, कोई भी कंट्री जब टैलेंट पे निवेश करती है तो उस राज्य के डेवलप होने में, उस स्टेट को डेवलप होने में कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आज आप सब नए भारत का मार्ग प्रशस्त करने वाले सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, यहाँ पर सब मिले। कल धर्मेंद्र प्रधान साहब ने भी बहुत सारे इंटरेक्शन किए, आपसे भी आइडियाज मिले, आपसे भी कोई छोटी बड़ी कोई मुश्किल हो तो उसकी भी बात हुई और उसको हम पूरे ध्यान से उसको सुना भी है। और अगले समय में आपकी मुश्किल या कहीं कहीं छोटी छोटी हो तो उसके आसान करने के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री से भी बात करेंगे और उसको आसान करने के लिए नए तरीके भी खोज निकालेंगे। और आप सबको आज गुजरात में और गुजरात के पूरे टैलेंट को विश्व भर में छाया हुआ है, देश भर में छाया हुआ है, भारत का टैलेंट पर दुनिया में छाया हुआ है। और अब आगे की सोच, नए भारत की सोच में आप सबका योगदान बहुत अमूल्य रहेगा। आप सबका गुजरात में स्वागत है, इस कॉन्क्लेव में स्वागत है। और धबकते हुए, वाइब्रेंट बनते हुए गुजरात, वैसे तो ये 10वां वाइब्रेंट होगा और उसके प्री वाइब्रेंट ये पहला होगा कि स्टार्टअप को इंक्लूड किया है। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे विचार लोगों के सामने रखे हैं। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका वेलकम करके फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। I would now request Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship and Electronics and Information Technology of India, Shri Rajiv Chandrasekhar, to deliver his valuable speech. The most dynamic and hardworking Chief Minister of Gujarat, Bhupinder Patel ji, my colleague Rishikesh Patel ji, my other colleagues from the Government of India and Government of Gujarat on the dais, ladies and gentlemen, friends in the media, thank you for inviting me to speak here today at this very impressive Startup Conclave 2023. I will add a little bit to what has already been said. I will start by sharing with you what I genuinely feel, that this is certainly one of the most exciting times in the history of independent India that we are living in. For those who are participants in the tech economy and the innovation economy, I can tell you that after 30-35 years of being in tech, I feel that this is the most exciting time for technology and innovation in India ever. I am particularly pleased to travel to Gujarat, as I do often, because there are so many path-breaking initiatives by the government of Gujarat that we are pleased to support and be a part of. Just a few months ago, a few weeks ago, I was here for the groundbreaking of India's first semiconductor packaging plant that is coming up in Gujarat. And here I am today celebrating the growth of the startup and innovation ecosystem today amongst all of you. I say it is an exciting time for India because look at how far our innovation ecosystem has grown since 2014. Look at how far our digital economy has grown since 2014. How these targets and ambitions that the Honorable Prime Minister set forth in 2015 when he launched Digital India has transformed qualitatively, quantitatively our economy, our innovation ecosystem, our position as a nation,
amongst the global community of nations, our position has transformed from being 3 decades of a consumer of technology to today being a producer of devices, products, platforms, and solutions for the world. So what a remarkable transformation the last 9 years under Prime Minister Narendra Modi ji has been. An economy that was dominated by a few groups and a few segments now is a highly diversified economy where the GDP, which is the fastest growing in the world, has a digital economy that is growing at 2.5 times the GDP, and we are certainly the fastest growing digital economy in the world as well. But the most important attribute of this transformation is the fact that today the Indian economy and India's growth and India's future is as much being architected by young Indians, their effort, their innovation, their determination, their hard work, as any other segment of the economy. It used to be that the Indian economy was dominated, as I said earlier, by a few conglomerates, and as they rose, the economy rose. As they fell, the economy fell. But our economy today, as the Honorable Prime Minister said from the ramparts of the Red Fort on August 15, 2022, the future of India will be the India decade, 10 years or a decade of technology opportunities. But most importantly, he said, this India decade, this new India, this Vikasit Bharat will be architected and built by young Indians from all over the country, including in Gujarat. To those who are participants in tech, and I see many of you here today who are startups, let me just share with you the rapid acceleration of the overall digitization of our economy, but also how opportunity-rich the environment has become. In 2014, the digital economy was 4.5% of the GDP. Today we are at 11% of GDP, and by 2026, the digital and innovation economy will account for 1/5, 20% of the GDP. In 2014, when we talked about the digital economy, we talked about IT and ITES, and here we are 9 years later, and we look at the landscape of opportunities, the opportunity-rich landscape, and you can see an Indian flag and an Indian startup in almost every segment of the tech ecosystem. Whether it is semiconductors, electronics, microelectronics, artificial intelligence, the Web3, high-performance computing, quantum computing, consumer internet, and of course, the continuing to grow IT and ITS segments. Every segment of the technology ecosystem and every segment of the innovation economy has Indian flags, and those flags are being held proudly by startups from all over the country, including in Gujarat. So I say, at no risk of being contradicted, the best time for startups, the best time for innovation is yet to come. And as the Honorable Prime Minister said in 2022, the India decade, the next decade, will be a decade of opportunities for Indian startups and young Indians. I understand there are many colleges and academic institutions represented today here, and to them I certainly want to point out the change role and the much more important role that academic institutions will play in the coming decade in this journey towards Vikasit Bharat. And the best way I describe their new role is the following way. In my generation, when you looked at a college or a university or an academic institution and measured their performance, a college that was an outstanding college would consider themselves outstanding by saying, हमारे कॉलेज से 10 लोग गूगल यूएस में चले गए हैं, हमारे कॉलेज में से 5 लोग स्टैनफोर्ड में गए हैं, 3 लोग माइक्रोसॉफ्ट में चले गए हैं. The export of talent, creating talent and exporting talent was really the metric by which we measured performance in an academic institution. In today's day and in the coming decade, academic institutions will be measured by, and the high-performing academic institutions will be those
that innovate and create an enabling environment for their students to become successful startups and successful entrepreneurs and contribute to the Indian digital economy. So I would urge every academic institution, especially the so many high quality universities and colleges in Gujarat, to establish good strong linkages with industry, good strong linkages with research institutions, and create incubators and startup enabling ecosystems within their colleges and campuses. The next decade, as I said, and I'll quickly end, the next decade is certainly going to be a very exciting decade. For those in technology, it is the India decade, but more importantly, the last 9 years of transformation that the Honorable Prime Minister has done for India has freed all of us to pursue our dreams and succeed on our own without having any godfathers, without having any political connections or any other connections. That transformation is going to continue in even more capitalized and accelerated manner in the India decade and will lead to this vision that the Honorable Prime Minister has placed in front of us of a Vikasit Bharat, of a developed nation where young Indians will be simply playing a much more important role than ever before in the history of India. Again, I congratulate the government of Gujarat for organizing this very, very impressive Startup Conclave. To all of those who are participating here, who are already startups, to all of those who are studying today and who want to be startups, I say this is the best time ever for you to make your dreams a successful career, a successful startup, or a successful enterprise. Go ahead, go forward, fulfill your dreams, work hard, make yourself proud, make your family proud, make your state proud, and make your country proud. Thank you. Namaste. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your highly informative address. The New India Vibrant Hackathon was organized, and the colleges, institutes, schools all over the state and country took active participation, and they really, really worked hard to solve the problems of the real-world challenges. आज माननीय मुख्यमंत्री एवं मंच से विराजमान अतिथियों के हाथों से हैकाथन विनर्स को हम चेक एवं सर्टिफिकेट से पुरस्कृत करेंगे. Foremost would call on stage team leader and the team from Marwadi Education Foundation's group of institutions, Faculty of Technology. Their sector was Clean and Green Technology, and the problem title was Identification of Water Contamination Source of Surat Municipal Corporation. You can congratulate them with a big round of applause for their hard work. Next is the Government Engineering College, Valsad. Their sector was digitalization, and the problem title was Digital Platform for Irrigation Management. Congratulations. Next is Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad. They worked for energy sector, and the problem title was Humidity Controller, Dehumidifier for Panels and Cubicles. Next is Rothingham College of Arts and Science, Coimbatore, Tamil Nadu. They have worked in the health and sports sector, and the problem title was Mapping of Hereditary and Genetic History of Families Having Sickle Cell Anemia. Congratulations. I would now call upon one more time the Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad, whose second sector was Logistics and Infrastructure, and the problem title was Sports Infrastructure Management.
will now call AV Parekh Technical Institute, Rajkot for their work in security sector, and the problem title was Criminal Profiling Using Open Source Intelligence Tools. Will now call Chandigarh University team, and their sector was Smart Automation and Problem. Title was Mining Vehicles Tracking Using GPS. Congratulations. We now call Sri Swami Atmanand Saraswati Institute of Technology, Surat, who have worked in social impact, and their problem title is a mobile app for farmers of Navsari district to get Jeev Amrit for natural farming. Next is Parul Institute of Technology, Limra, Vadhoria. This is all-girls team who work on the empowering women's safety, utilizing GIS mapping for strengthening the 181 helpline in mega cities. Third time it is pleasure to call upon Vishwakarma Government Engineering College, Ahmedabad, who worked in smart education sector, and their problem title is Smart Evaluation and Recommendation System, Higher Secondary Studies. Next winner is Vanika Vishram Women's University, Surat. Its all-girls team, and their problem title was Empowering Women's Safety, Utilizing GIS Mapping for Strengthening the 181 Helpline in Mega Cities. And the last winner team is from Airport School, Ahmedabad. This school team has worked on the problem of activity monitoring of any person through multiple social media platforms like social networking sites and social media. Once again, we congratulate all the winners and best wishes for their bright future. Today, on the onset of the significant Startup Conclave, we will be declaring the investors' pitch winner and also will be distributing the checks and the letter of intent. In the august presence of Honorable Chief Minister Sir and other dignitaries, the investors will hand over checks and letters to the aspiring startups. We would like to let you know that total 146 crores of investment is done for the aspiring and bright startups. Foremost, we'll call Kathiawar Ventures to hand over the check of 1 crore to Pentest X. Congratulations. We'll now request Kathiawar Ventures to hand over the check to Vakalat worth rupees 1 crore. Congratulations. We will now request Kathiawar Ventures to hand over the check to AG Prop worth rupees 1 crore. We'll now request Kathiawar Ventures to hand over the check to Verister worth rupees 1 crore. We'll now request Kathiawar Ventures to hand over the check to SR Charging Stations worth rupees 1 crore.
Thank you. Will now request Real-Time Angel Fund to hand over check to Culture X worth rupees 1.87 crore. Will now request Real-Time Angel Fund to hand over check to One Dios worth rupees 0.5 crore. Will now request Real-Time Angel Fund to hand over a check to Magnum Technology Private Limited House Easy worth rupees 0.5 crore. Congratulations. Will now request Gujarat Venture Finance Limited to hand over a check to Ghost Kitchen worth rupees 10 crore. Will now request Gujarat Venture Finance Limited to hand over a check to EV5 worth rupees 5 crore. Will now request Gujarat Venture Finance Limited to hand over a check to DICE worth rupees 10 crore. Now it's time to hand over the letter of intent today. Foremost would call Conclave Ventures to hand over LOI to Ankpal Technologies worth rupees 0.5 crore. Would now call India Accelerators to hand over LOI to IG Drone worth rupees 2 crore. Would now request India Accelerators to hand over LOI to Paralytic worth rupees 1.5 crore. Would now request Shiru Advisory Private Limited to hand over LOI to Stroom worth rupees 1.5 crore. Would now request Shiru Advisory Private Limited to hand over LOI to Indie Food Sports worth rupees 2.5 crore. Would now call Real-Time Angel Fund to hand over LOI to Repository worth rupees 1.5 crore.
would now call Yes Bank to hand over LOI to Green Manure worth rupees 10 crore. Would now request Yes Bank to hand over LOI to Keepsake Automations worth rupees 10 crore. Thank you, everyone, and can we congratulate everyone with a big round of applause and wish them good luck. New India Vibrant Hackathon 2023 was organized to inculcate problem-solving skills and attitude in today's youth. The regional round was held at places from which 181 teams qualified for the grand finale. A report was published and prepared on this hackathon. मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एवं महानुभावों से हैकाथॉन रिपोर्ट लॉन्च करने के लिए नम्र निवेदन करती हूं। Thank you. We have meticulously curated a coffee table book featuring 75 technology startups. The book aims to showcase emerging talents, providing investors with valuable insights to navigate the dynamic startup landscape. मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एवं मंत्री से विराजमान सभी महानुभावों से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस कॉफी टेबल बुक को लॉन्च करें। Thank you very much. ગુજરાતના વિકાસ પથ પર હર હંમેશ નવીન અને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણ રાખવો જેમનો મૂળભૂત આગ્રહ છે, જેઓ સદૈવ નવા વિચાર, નવા અભિગમને બિરદાવે છે, અપનાવે છે અને તેના અમલીકરણ માટે સચોટ માર્ગદર્શન પણ પૂરું પાડે છે. એવા આપણા ગુજરાતના મૃદુ અને મક્તમ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ખૂબ ઉત્સાહ સાથે તેઓના વિશેષ સંબોધન માટે આભાર આપીએ. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, मेरे साथी मंत्री श्री ऋषिकेश भाई पटेल, राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, श्री राजेश कुमार सिंह, मुकेश कुमार जी, अंशानिधि पानी, पीपी पंड्या जी, उपस्थित सभी शिक्षाविद तज्ञों, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति। विश्व के नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने युवा शक्ति के भरोसे
नए भारत, विकसित भारत की बुनियाद रखी है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्म और कर्मभूमि में आयोजित युवा साहसिक के नए थॉट्स एक्सचेंज के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज तक इनोवेशन ही प्रगति और विकास के केंद्र में रहा है। आदिकाल में आग की खोज हो, रेल की खोज हो, आत्मरक्षा के लिए हथियार की खोज को लेकर आज के आधुनिक युग में ड्रोन, स्पेस, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमने प्रगति और विकास किया है। एक बात तो तय है कि प्राचीन काल से ही इनोवेशन से सामाजिक जीवन में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हमसे सभी प्रयत्न के भीतर मौजूद इनोवेशन की सोच को पोषित करने और उसे अपनाने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को किताबी ज्ञान पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज पर अधिक ध्यान देकर आगे बढ़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे विजनरी लीडर हैं कि उन्होंने इस तरह के बदलाव के लिए कई पहल किए हैं। प्रधानमंत्री के अनेक प्रयासों के कारण ही आज युवा शक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं। उनके विचारों को नए पंख और नए आसमान मिल रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। युवा शक्ति के सामर्थ्य से विकसित भारत और 2047 के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के लिए स्टार्टअप इनोवेशन को प्रायोरिटी दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा समय के आगे की सोच रखते हैं। युवा साथियों को सपनों, उनके नए विचार और उनके संकल्पों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3S का कॉन्सेप्ट दिया है। स्पोर्ट्स, स्किल और स्टार्टअप, इन तीनों सेक्टर के ग्लोबल कंपटीशन में आज भारत का युवा अपनी विशेष पहचान बना चुका है। हमारे देश में टैलेंट पूल तो है, लेकिन उसे टैलेंट पूल के इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलने, इसके लिए संस्थागत व्यवस्था की कमी थी। इनोवेशन इंडस्ट्रीज में बदलाव हो, इसके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की जरूरत थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समस्याओं के समाधान स्वरूप 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन की शुरुआत करवा दी थी। प्रधानमंत्री जी के इस युवा केंद्रीय प्रयास के कारण ही आज स्टार्टअप और इनोवेशन अब केवल डिक्शनरी के शब्द न रहकर भारत के हर युवा का जीवन मंत्र बन गए हैं। पहले कोई भी स्टार्टअप अपने इनोवेशन को पेटेंट कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में इतनी जटिलता थी कि हमारे युवा इनोवेटर्स काफी निराश थे। प्रधानमंत्री जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हुए पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को काफी सरल बना दी है। मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इस अचीवमेंट के पीछे प्रधानमंत्री श्री की युवा सपनों को पूरा करने की गारंटी है। हमारे यूथ को ग्लोबल यूथ बनाने की गारंटी है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनकी परियोजनाओं को लागू करने में गुजरात अग्रणी है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज गुजरात देश के लिए विकास का रोल मॉडल बना है। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनके द्वारा शुरू की गई एक और पहल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने गुजरात के व्यापार, उद्योग, साहसिकता और हमारे राज्य के पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को ग्लोबल मैप में एक नई पहचान दिलाई।
2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट भी एक स्टार्टअप के तौर पर ही शुरू की गई थी। आज यही समिट एक विशाल वटवृक्ष की तरह एक अर्थ में ग्लोबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। आगामी जनवरी 2024 में 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन होने जा रहा है और स्टार्टअप इसमें पार्टनर बने, इसलिए आज इस प्री वाइब्रेंट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। मैं एजुकेशन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतने बेहतरीन तरीके से आयोजित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्क्लेव गुजरात और देश के युवा स्टार्टअप को दुनिया से जुड़ने और उनकी इनोवेटिव थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगा। स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए 50 से अधिक वेंचर फंडिंग और उद्योग जगत के कई अग्रणियों को भी इस कॉन्क्लेव में सहभागी बनाया गया है, जिससे हमारे स्टार्टअप को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात ने सर्वग्राही स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर लिया है। 2016 में गुजरात में सबसे पहले 5 सालों के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लागू की। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP के लिए पहले 200 करोड़ रुपया और अब SSIP 2.0 के लिए 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। युवाओं के सकारात्मक प्रयासों और राज्य सरकार की प्रोत्साहन नीतियों के परिणाम स्वरूप गुजरात लगातार 3 बार स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट रहा है। स्टार्टअप के लिए गुजरात के सबसे बेस्ट स्टेट होने का एक कारण यह भी है कि पिछले कई सालों से गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट चॉइस स्टेट रहा है। गुजरात में ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और एरोस्पेस जैसी सेक्टर्स के लिए नए आयाम खुल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर्स में उभर रहे नए स्टार्टअप को काफी सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई नेतृत्व में हम विकसित भारत 2047 की ओर अग्रसर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम से विकसित भारत, उन्नत भारत को अमृत काल में साकार करने के लिए देश के युवा संकल्पित है। यह उन सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है और समर्पित है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है, भारत का आने वाला समय है। इस अनमोल समय में हम सभी साथ मिलकर युवा शक्ति के सामर्थ्य के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल होंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरु गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन, संपूर्ण मार्गदर्शन एवं प्रेरक उपस्थिति के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। In order to extend the vote of thanks, I would now like to invite Shri Banjani Dipani, IAS, Commissioner of Technical Education, Government of Gujarat. Thank you. Today is a historic day for Startup Conclave 2023. Education Department has been organizing since last 3 days, and all the 3 days, Honorable Chief Minister Sir remained present, first in the inauguration of iHub, second in the roundtable of unicorns and venture capital funds yesterday, and today in the Startup Conclave. I would like to express my sincere thanks to Bhupendra Patel Bhai Patel, Chief Minister of Gujarat, for gracing us and sharing his valuable insights in the keynote address. Sir, we are grateful to you. We are also thankful to Shri Rajiv Chandrasekhar, Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship, Electronics and Information Technology of India, for his valuable guidance, and throughout the entire program, Sir's guidance has been immensely beneficial to us. I would also like to express my thanks to Shri Rishikesh Patel, Minister of Higher and Technical Education, for his continuous commitment in
entire program ranging from hackathon till today, the conclave. I would like to express my gratitude to Shri Rajkumar sir, Chief Secretary, Government of Gujarat, for his continuous guidance and help in organizing this 3-day conclave from beginning. I would also like to thank Shri Rajesh Kumar Singh, Secretary, DPIIT. Sir's support, entire Startup India support has been immensely beneficial, and we are grateful for the entire program that is given to us. I would also like to express my sincere thanks to Mukesh Kumar sir, who has been our guide and support throughout for curating and setting this grand conclave. I would also like to express my sincere thanks to Mr. Pandya, Director, Higher Education, our guardian officers, committee members of organizing committee, Team Startup India, MeitY, and different stakeholders of the Startup Conclave, national partner FICCI, knowledge partner Grant Thornton, exhibition partner KMD, volunteers, and everyone who have been extremely supportive in their ground support to all of us. In this journey from mind to market and idea to enterprise, we will see today 4 sessions. After this, first is India's Startup Story by DPIIT, Rising Stars, India's Unicorn Club and their impact. The third session will be on Investors Compass, navigating the startup landscape, and the fourth will be presence of global accelerators from different continents of the globe. They're all here, and again, I would express my sincere thanks to the dignitaries sitting in the dais, and thank you very much. After this, we'll inaugurate the exhibition and expo by Honorable Chief Minister, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your warm thank you note. We appreciate it. With this, we end our inaugural session. आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री श्री को धन्यवाद करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए, और फिर से पधारने का निमंत्रण देते हुए उन्हें एग्जीबिशन इनॉग्रेट करने के लिए निमंत्रण देते हैं. थैंक यू. Ladies and gentlemen, within 5 minutes from now, we will start the India Startup Story session curated by Startup India DPI.